कल रात माता का मुझे मैसेज आया है और माता ने आप सभी को टेक्स्ट बुक पर बुलाया है। जी हाँ, माता का मैसेज आ गया है और आ गई है नवरात्रि सेल। इस 21, 22 और 23 मार्च को अप टू 90% ऑफ मिलेगा सभी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ। इतना ही नहीं, आप मेक माई ट्रिप के साथ जीत सकते हैं मौका वैष्णो देवी जाने का और माता के दर्शन करने का। साथ ही टेक्स्ट बुक पास पर एक ऐतिहासिक ऑफर, सबसे कम दाम पर मिलेगा 1 साल की वैलिडिटी वाला टेक्स्ट बुक पास सिर्फ ₹249 में। तो अगर आप एसएससी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टीचिंग, एजेई, इंजीनियरिंग, डिफेंस, स्टेट पीएससी, यूपीएससी से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए और एनरोल कीजिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। जय माता दी। Hello students, a warm welcome and a very good evening to each one of you. I welcome you all to another session on the textbook super coaching platform on the CDS, AFCAT and CAPF channel. My name is Navin. We've been doing sessions for the CDS exams that is upcoming presently. वो हम करते आए हैं। कल हमारा पहला सेशन था। Today we are about to start the next session. So quickly join in everyone. Give me a quick acknowledgement and also share the session with your friends, colleagues and fellow aspirants ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका benefit उठा सकें। No, Chavi, I will no longer take classes at Unacademy. Okay, I will be taking classes on this particular platform, which is Textbook Super Coaching. For people who haven't subscribed to the channel yet, please do it right away. Okay, that will really help. So चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। बिफोर आई स्टार्ट मैं बता दूं, द CDS, CAPF एंड AFCAT के लिए अभी नवरात्रि सेल चल रहा है। You'll get 40% plus 35% off and 50% extra validity. This is the current fee, लेकिन नवरात्रि सेल में आपको ये वाले फी में आपको 6 month plus 3 months subscription मिलेगा। You can use this code JOSH to avail additional discount. Use the code JOSH to avail additional discount, guys. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। Just a minute. All right. So here is the first question of the day, which is based on error spotting. Error spotting पे based ये question है. We'll be doing a mix of all questions. So सबसे पहले हम error spotting question से शुरू कर रहे हैं यहाँ पे. I hope the question is visible to all of you. जरा सा मैं इसको right align कर देता हूँ. Okay. Just a minute, guys. Okay. Now the question should be visible to each one of you. फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए and you have to give me the answer as to which part of the sentence has an error. कौन से part में error है ये आपको बताना है. So here is the first question. It says he questioned whether the school curriculum was enough broad in scope. आप मुझे बताइए सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है. ओके, यू शुड बी अवेयर ऑफ द ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स. ऑब्वियसली प्रैक्टिस सेशंस हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स मैं आपको ऑब्वियसली प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ. इसके थ्रू मैं कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा. तो यस, सम ऑफ यू वर राइट. द करेक्ट आंसर इज सी. एरर इज इन पार्ट सी. ओके, एरर कौन से पार्ट में है? सी पार्ट में, विच इज इनफ ब्रॉड नहीं, आप यहाँ पे लिखोगे ब्रॉड इनफ इन स्कोप. ओके, रूल कहता है जब भी इनफ एडवर्ब के तरह यूज किया जाता है इट शुड बी रिटन आफ्टर द वर्ड इट क्वालिफाइज. इस वर्ड के बाद लिखोगे. सो ब्रॉड इनफ इन स्कोप, एरर इज इन पार्ट सी. Whoever said that was absolutely right. Do share the session. सेशन को ज़्यादा शेयर करते चलिए, because most students are not aware of this, that I've been taking classes on this particular channel. Okay जी, अगले सवाल पे चलते हैं. Here is the next question.
ध्यान से पढ़ो एंड टेल मी विच पार्ट हैज द एरर. इट सेज lying to ourselves is more deeply ingrained than to lying to others. Which part do you think has the error here? हेलो अश्विनी, प्रणाम, खुश रहो सभी लोग. ओके गाइस, याद रखना यहाँ पे कुछ लोगों ने सही आंसर दिया है. अगेन वेल डन. कभी भी सेंटेंस में दैन आता है ना, इसके बाद हमेशा आप सिंपल इन्फिनेटिव ही लगाओगे. V1 lying to ourselves is more deeply ingrained than to lying नहीं, आप लिखोगे than lying. V1 या V4, मतलब शॉर्ट में समझो. दैन जब भी आता है, दैन के लेफ्ट हैंड साइड में V1 आएगा तो V1 लिखोगे, और राइट लेफ्ट हैंड साइड में V4 आया तो V4 लिखोगे. lying to ourselves is more deeply ingrained than lying to others. मैं यहाँ पे lying और lying को कंपेयर कर रहे हैं. तो आप सभी को पता होगा जब भी हम कंजंक्शंस की बात करते हैं, कंजंक्शंस में जो भी आपके कंजंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में होता है वही कंजंक्शन के राइट हैंड साइड में ही होता है. तो कंजंक्शन जब भी आता है आपका दैन जनरली, उसके बाद आप प्रेपोजिशन टू का प्रयोग नहीं करोगे. You say lying to ourselves is more deeply ingrained than lying to others. Error is in part C. अगला सवाल ये रहा, ध्यान से पढ़ो एंड आंसर मी. You can lead a man up to the university, but you can't make him to think. नो प्रॉब्लम अंकित, वेलकम. थोड़ा सा लेट हो गए तो चलेगा, जो भी मिस किए हो आप देख लेना. यू कैन वॉच इट लेटर, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ओके, डी कुछ लोग कह रहे हैं डी पार्ट. ओके, याद रखना गाइस, कुछ वर्ड्स हैं जैसे मेक, लेट, ओके, इनके बाद आप हमेशा V1 का प्रयोग करोगे. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन दी एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस में मेक और लेट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा. एक्चुअली में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी नहीं है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो है बट इसे हम कहते हैं सिंपल इन्फिनेटिव या बेयर इन्फिनेटिव. सो यू कैन लीड अ मैन अप टू द यूनिवर्सिटी बट यू कांट मेक हिम थिंक. टू का प्रयोग नहीं करोगे. एरर इज इन पार्ट डी. सम ऑफ यू वर करेक्ट. वेल डन. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर गोज. Read it and tell me which part has the error. If you would have told me you needed a ride, I would have left earlier. A, B, C, D. D थोड़ा सा ढक गया है, बट ऐसे आप कमेंट करके बताओ कौन से पार्ट में आपको लगता है एरर है इस क्वेश्चन में. थर्ड कंडीशनल आप सभी को याद होगा, जहां पे इफ के साथ आप पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हो. अगर ऐसा होता तो ऐसा हो सकता था. इफ के साथ आप पास्ट परफेक्ट यूज करते हो, तो इफ यू वुड हैव टोल्ड मी नहीं, आप लिखोगे इफ यू हैड टोल्ड मी यू नीडेड अ राइड, आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर. इफ यू हैड टोल्ड मी. सो यस, द एरर इज इन पार्ट ए. अगर तुमने बता दिया होता कि तुम्हें राइड की जरूरत है तो मैं और भी जल्दी निकलता तुम्हें ड्रॉप करने के लिए. दैट्स द मीनिंग. सो यस, थर्ड कंडीशनल वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा है. अगर थर्ड कंडीशनल नहीं जानते हो तो प्लीज एंश्योर दैट यू लर्न दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. अगला सवाल ये रहा. द कंपनी हैज एन ऑडिट एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर्स. कौन से पार्ट में एरर है बताओ. Okay, right. Okay, so each financial year, absolutely. आप सभी को पता होगा जब भी सेंटेंस में एवरी आता है, ईच आता है, आइदर आता है या नाइदर आता है,
ओके, इन सभी के बाद आप सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन लगाते हो। ओके, सिंगुलर नाउन लगाते हो, याद रखना। सो ईच फाइनेंशियल ईयर्स नहीं, ईच फाइनेंशियल ईयर, एरर इज इन पार्ट सी। वेल डन, सम ऑफ यू आर राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेल डन पीपल। ईच फाइनेंशियल ईयर लिखेंगे, नॉट ईयर्स। ओके, रिमेंबर दिस रूल। लेकिन ये रूल चेंज हो जाता है जब एवरी वन ऑफ हो जाए या ईच ऑफ आ जाए, आइदर ऑफ आ जाए या नाइदर ऑफ आ जाए, तब क्या लिखोगे? ओके, जैसे ईच स्टूडेंट हैज पास्ड, ये तो सही है, लेकिन ईच ऑफ लिख दो तो ईच ऑफ द स्टूडेंट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। इन सभी के बाद ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया हो तो उसके बाद आप हमेशा प्लूरल नाउन लिखोगे, सिंगुलर नहीं, रिमेंबर। अगला सवाल ये रहा, रीड इट एंड टेल मी विच पार्ट हैज द एरर। सीताज आईज वाइडेंड ऑफ सरप्राइज, कौन से पार्ट में एरर है बताओ? ओके, सीताज आईज वाइडेंड ऑफ नहीं, देर इज अ प्रेपोजिशनल एरर, आप लिखोगे वाइडेंड विथ। सीताज आईज वाइडेंड विथ सरप्राइज, विथ इज एब्सोल्युटली राइट, वाइडेंड के साथ हमेशा विथ आपका प्रयोग करोगे। ओके, आश्चर्य से उसकी आंखें फटी रह गईं, दैट्स द मीनिंग, या खुली रह गईं। द करेक्ट आंसर इज सीताज आईज वाइडेंड विथ सरप्राइज इज राइट, वेल डन। अगला सवाल, when you bring the babies home can I come and stay with you to take care of them, कौन से पार्ट में एरर है? should be a pretty simple one, tense based error है, I'm giving you a hint, so you tell me which part has the error. A, B, C and D. D थोड़ा सा ढका हुआ है पीछे, but you can still answer. You obviously know 4 parts होते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। Yes, the correct answer is when you bring the babies home can I come home. आप सभी को ये रूल अगर पता होगा कि मॉडल वर्ब्स, व्हाट आर मॉडल वर्ब्स? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, नीड टू, मस्ट एंड यूज टू। मॉडल वर्ब्स के बाद आप हमेशा V1 या सिंपल इंफिनिटिव का प्रयोग करते हो। सो कैन आई कम एंड कैन आई स्टे विथ यू टू, हालांकि यहां पे तो V1 लग गया, यहां पे तो V1 लग गया, बट यहां पे कैन के हिसाब से नहीं लगा है, यहां पे टू इंफिनिटिव लगा है, जिसे हम कहते हैं टू इंफिनिटिव। टू इंफिनिटिव क्या होता है? बेसिकली 2 + V1 को हम टू इंफिनिटिव कहते हैं। अगेन गाइस, मैं चाहूंगा कि जो लोग नए हो इस सेशन में, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS 2 2023, you should actually, and your basics are not strong, you should enroll yourselves in our courses, जहां पे मैं डिटेल में ये कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा कि इन्फिनिटिव्स क्या होता है, फाइनाइट वर्ब्स क्या होता है। शॉर्ट में समझिए, फाइनाइट वर्ब्स टेंस बताते हैं, इन्फिनिटिव्स टेंस नहीं बताते, और हमेशा फाइनाइट वर्ब्स V1 हो सकता है और टू इन्फिनिटिव 2 + V1 होता है, सॉरी बेयर इन्फिनिटिव V1 होता है और टू इन्फिनिटिव 2 + V1 होता है। फाइनाइट वर्ब्स के तो कई सारे फॉर्म्स हैं, V1, V2, V3, V4, V5, अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग फॉर्म्स में आप क्लासिफाई कर सकते हो, लेकिन सिंपल इन्फिनिटिव होता है V1, टू इन्फिनिटिव होता है 2 + V1। तो यहां पे टू इन्फिनिटिव की जरूरत है, टू के बाद V1 लिखने की जरूरत है, टू से टू टेक केयर ऑफ देम इज एब्सोल्युटली राइट। इवन इफ यू डू नॉट नो द कॉन्सेप्ट, अगर आप फ्लो में सेंटेंस को पढ़ते हो तो आई एम श्योर यू शुड बी एबल टू आंसर दिस विदाउट एनी इश्यूज एट ऑल। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल ये रहा, टेल मी विच पार्ट हैज द एरर। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, कौन से पार्ट में एरर है बताओ। ओके, यस, यहां पे रूल क्या बना है, जब भी सेंटेंस कोई नेगेटिव एडवर्ब से शुरू होता है, whenever a sentence starts with a negative adverb, please remember that you always use inversion in such cases.
ओके, जिसका मतलब नॉट ओनली ही डज नहीं, ही इज एक्चुअली द सब्जेक्ट। और इन्वर्जन में क्या होता है, पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखते हो, you put the helping verb, then you put the subject, then you put the main verb, जैसे आप interrogative sentences लिखते हो। so not only he does नहीं, he को आप लेके जाओगे does के बाद, not only does he love chocolate and sweets but he also smokes, so error is in part A। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, he not only loves chocolates but he also smokes। दोनों ही तरीके सही हैं, आइदर वेज एरर फर्स्ट पार्ट में होगा। दूसरे तरीके से बनाओगे तो एरर दूसरे पार्ट में भी आ जाएगा, बट ऐसे केसेस में अगर आपको लगता है दो पार्ट में एरर है तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल दैट यू सेलेक्ट द फर्स्ट पार्ट इन विच देयर इज एन एरर। सो यस, ए whosoever said was right। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर गोस, जरा नीचे आ गया, इसको जरा ठीक कर दूं, एक मिनट देना। अब ठीक है, टेल मी विच पार्ट हैज द एरर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Having read a number of stories about space travel, his dream now is about to visit the moon। बट ही ऑल्सो, ऐसे भी लिख सकते हो वॉलीबॉल लाइफ, ये जो नॉट ओनली बट ऑल्सो है इसको आप सेपरेट करके भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है हमेशा एक साथ ही आएगा, बट ही ऑल्सो करके भी लिखा जा सकता। ऑलराइट, हैविंग रेड अ नंबर ऑफ स्टोरीज अबाउट स्पेस ट्रैवल, हिज ड्रीम नाउ इज, याद रखना कभी भी आप ड्रीम लिखते हो, यू से ड्रीम, then you put the preposition of, then you put a gerund। gerund क्या होता है, ing verbs that act like a noun। ing verbs जो noun के तरह काम करें उन्हें gerund कहते हैं। so having read a number of stories about space travel, his dream now is of visiting the moon, of visiting। कौन से पार्ट में error is in part C? okay, C part। गुड, अगला सवाल ये रहा, My aquarium has 2 fishes, of which one is a zebra fish, okay, and other is discus fish। वॉलीबॉल लाइफ, जरूरी नहीं है आपने नाउन में पढ़ा होगा कि फिश का प्लूरल फिशेज नहीं हो सकता, यही पढ़ा है ना, बट लेट मी टेल यू वन फैक्ट, फिश फिशेज नहीं हो सकता, यू आर राइट, बट फिश को फिशेज लिखा भी जा सकता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फिश। अगर अलग अलग प्रकार के मछलियों की बात कर रहे हो, फिश की बात कर रहे हो, तो फिशेज इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। So my aquarium has 2 fishes, of which one is a zebra fish and the other is discus fish। It's better to write one is a zebra fish and the other is a discus fish। Right away, error C part में होगा, you say and the other or the other one। okay, so यहाँ पे article लगाना जरूरी है। My aquarium has 2 fishes, of which one is zebra fish, one is a। एक चीज ये भी बता दूं, यहाँ पे अ लिखना ज्यादा अप्रोप्रिएट, ज्यादा प्रॉपर, ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर वाइज सेंटेंस को और भी बेहतर बना देगा। My aquarium has 2 fishes, of which one is a zebra fish and the other is a discus fish। okay, you can write it that way। अब आते हैं, जरा सा हम क्लोज टेस्ट का पैराग्राफ करेंगे। आई एम श्योर यू आर अवेयर व्हाट क्लोज टेस्ट इज। क्लोज टेस्ट में आपके पास ऐसे पैसेजेस होते हैं, you have to read the passage and answer, fill in the blank। okay, fill in the blank for each blank। अगर आप देखो तो blank सारे यहाँ पे numbered हैं, है कि नहीं? the blanks are numbered, you have to select the most appropriate option for each blank here। so ऐसे cases में क्या करना चाहिए, what should you do in order to
select the appropriate answer in such cases. तो सबसे पहले याद रखना, okay, read the paragraph without looking at the options. It's always better to read the paragraph quickly without looking at the options. एक बार आप जब paragraph पढ़ लेते हो, you get a fair idea as to what the paragraph is trying to convey to you, what the idea or thought of the paragraph is, and then you can go ahead and select the most appropriate option. So I read the paragraph out to you and then we can select the answer. कुछ लोग already answer देना शुरू कर चुके हैं. Well done. यहाँ पे देखो, it says if you prefer mountains dash deserts, try Darjeeling. West Bengal's hill resort that dash at the foothills of the mighty Himalayas, dash while in Bengal. If your spirit of adventure gets the better of you, dash the ferry to the Sundarbans, the world's largest delta. But if these places do not attract you, there's Bhutan, the quiet Himalayan kingdom, dash West Bengal. So क्या लिखोगे? If you prefer dash, okay, कई लोगों ने already answer दिया. Well done. If you prefer mountains to deserts, prefer के साथ हमेशा to का प्रयोग करते हैं. This I discussed yesterday as well. जब भी sentence में senior, junior, superior, inferior, elder, prior, prefer, preferable ये सब आता है, इनके साथ हमेशा आप to का प्रयोग करते हो. Very good. अगला सवाल ये रहा. Blank number 2. Try Darjeeling, West Bengal's hill resort that dash at the foothills of the mighty Himalayas. Rests, sleeps, cuddles or nestles. क्या होना चाहिए? Okay, I'm getting different answers. The correct answer should be rests. Okay, rests is absolutely right. That rests at the foothills of the mighty Himalayas. Sleeps का मतलब तो सोना. Cuddles का मतलब जैसे आपने पप्स को देखा होगा, छोटे छोटे पपीज जो कडल करके सोते हैं, झुंड बना के एक के ऊपर एक. So kind of एक दूसरे के अंदर घुस के, that is cuddles. And nestles का मतलब होता है to stay comfortably. Again, nestle is generally used for huddling. एक तरह से आप समझ सकते हो कि cuddles, nestles more or less quite similar words. Okay, तो nestles यहाँ पे नहीं लिखोगे. The correct answer is rests. अगला सवाल, blank number 3. इसमें क्या आना चाहिए बताओ? Dash while in Bengal if your spirit of adventure gets the better of you. Dash while in Bengal, but, since, so, and. 4 options. Okay. Right, the correct answer is indeed so. Blank number 3 में आएगा. So while in Bengal, if your spirit of adventure gets the better of you. So while in Bengal, इसलिए जब आप बंगाल में हो, अगर आपको एडवेंचर करने का बहुत ज़्यादा मन है, बाकी चीज़ों से एडवेंचर को आप ज़्यादा प्रेफर करते हो, यू डैश द फेरी टू द सुंदरबंस. ब्लैंक नंबर 4 में बताइए. यू डैश द फेरी टू द सुंदरबंस. कहाँ गया? थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं टेक्स्ट को. ये रहा. You dash the ferry to the Sundarbans, the world's largest delta. Pay, take, pick or ask should be a simple one. Take. Well done. Pretty simple again. You take the ferry to the Sundarbans, the world's largest delta. Take the ferry to the Sundarbans, the world's largest delta. But if these places, okay, but if these places, एक मिनट. But if these places do not attract you, there's Bhutan, the quiet Himalayan kingdom, dash West Bengal. Surrounding, bordering, adjoining, skirting.
क्या होना चाहिए? बॉर्डरिंग वेस्ट बंगाल? इट्स नॉट बॉर्डरिंग वेस्ट बंगाल, इट्स एडजॉइनिंग. कोई चीज सटे हैं दो कंट्रीज, जैसे नेपाल इज एडजॉइनिंग बिहार एंड वेस्ट बंगाल, है ना. सो यू गॉट भूटान विच इज एडजॉइनिंग. ओके, उसके साथ साथ वो जुड़ा हुआ है द एंटायर कंट्री. सो सी इज एब्सोल्युटली राइट. इट्स नॉट सराउंडिंग, चारों तरफ से घेरा हो तो सराउंडिंग, कवर किया हो तो स्कर्टिंग. ओके, बॉर्डरिंग का मतलब होता है बॉर्डर पे पड़ता है. ओके, सो दैट्स द, दोज आर द 5 वर्ड्स. नाउ यहां पे आप जज करिए कितने आपके आंसर सही हुए. स्कर्टिंग का मतलब गाइस मिस करना भी हो सकता है, और टू गो अराउंड समथिंग. बॉर्डरिंग के सेंस में या सराउंडिंग के सेंस में आप स्कर्टिंग भी लिख सकते हो. ओके, वेरी गुड. चलते हैं अगले क्वेश्चंस के तरफ. लेट्स अटेम्प्ट अ फ्यू फिल इन द ब्लैंक्स. We dash read at least half of Shakespeare's comedies by the end of this year. Will have, will be, will have been. 4 options. Four out of 5, pretty good. Okay. क्या होना चाहिए इसका आंसर? ओके, सेंटेंस का हिंदी मीनिंग क्या है? हम शेक्सपियर के कॉमेडीज के आधे से ज्यादा शेक्सपियर के कॉमेडीज पढ़ चुके होंगे अगले साल के खत्म होने तक. सो द करेक्ट आंसर इज वी विल हैव रेड एट लीस्ट हाफ ऑफ शेक्सपियर्स कॉमेडीज बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. मतलब इस साल के एंड होने तक पढ़ चुके होंगे. सो वी विल हैव रेड इज करेक्ट. अगला सवाल ये रहा. आई डैश रीडिंग फॉर 2 hours बिफोर गोइंग टू स्कूल टुमारो. अगेन टेंस बेस्ड क्वेश्चन. Will have been, had been, will be or am. 4 options. Okay, the correct answer is A. I will have been reading for 2 hours before going to school tomorrow. सेंटेंस का हिंदी में मीनिंग क्या हुआ? मैं कल स्कूल जाने तक 2 घंटों से पढ़ता आ रहा हूंगा. बिफोर आई गो टू स्कूल टुमारो, तब तक मैं 2 घंटों से किताब पढ़ता आ रहा हूंगा. दिस इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. द यूसेज ऑफ दिस टेंस इज रादर very less. Okay, बहुत ही कम हम यूसेज करते हैं, but still you may get questions based on it. So you should be aware what future continuous tense denotes. Next question. The hit TV serial has ultimately boiled dash to a family drama that has disappointed many of its followers. ये वाला क्वेश्चन अगर आपने कल फॉलो किया था सेशन, तो आपको ये वाला क्वेश्चन कल भी आया था, इफ यू रिमेंबर. सो द हिट टीवी सीरियल, जो हिट टीवी सीरियल था, अल्टीमेटली वो फैमिली ड्रामा बन के रह गया है. सो द करेक्ट आंसर इज इट हैज बॉइल्ड डाउन टू. ओके, एविडेंटली कोई चीज किसी चीज में चेंज हो जाए, अल्टीमेटली कोई चीज बन जाए, इज द एंड रिजल्ट. सो यू से बॉइल्ड डाउन टू समथिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. इट वुड बी डैश हिस्टोरिकल मोमेंट व्हेन न्यूजीलैंड फाइनली हैज अ फीमेल प्राइम मिनिस्टर. क्या होना चाहिए बताइए इसमें? अ एंड द और व्हाट आर्टिकल यूसेज. अंश राणा, बॉइल्ड अप करके आप बोलते नहीं हो, सिंपली बॉइल्ड बोलते हो. बट कोई बहुत ज्यादा गुस्से में है, उसके लिए आप बॉइल्ड लिख सकते हो. ही वॉज बॉइलिंग विथ एंगर. बॉइल्ड अप करके नहीं लिखते जनरली. Okay, the correct answer is indeed A. It would be a historical moment when New Zealand finally has a female prime minister. यह एक ऐतिहासिक पल होगा, एक ऐतिहासिक पल. So it would be a historical moment. Yes, absolutely, A is correct. Next question. The report is due dash Wednesday and hence I am procrastinating.
अगेन द रिपोर्ट इज ड्यू ऑन वेंसडे, वेंसडे को ड्यू है, वेंसडे को होने वाला है, सो इट्स ड्यू ऑन. दिस क्वेश्चन ऑल्सो अपीयर्ड yesterday आई गेस. ओके, अब चलते हैं, कुछ हम ऑपोजिट वर्ड्स देखेंगे, एंटोनिम्स जिसे हम कहते हैं. वील अटेम्प्ट अ फ्यू एंटोनिम बेस्ड क्वेश्चंस. ऑपोजिट बताना है. ड्यूरिंग हर परफॉर्मेंस द नर्वस डांसर वाज जिटरी ऑन स्टेज. जिटरी का एंटोनिम शेकी, बोल्डनेस, पीसमील और प्रोफ्यूज. क्या होना चाहिए? 4 ऑप्शंस. Okay, well done, most of you are right. Boldness is correct. During her performance, the nervous dancer was jittery. Jittery का मतलब होता है बहुत ज्यादा डरी हुई थी. She was frightened. So frightened का एंटोनिम boldness. हालांकि frightened यहां पे ये एक एडजेक्टिव है और boldness आपका नाउन है, बट तब भी आप क्लोजेस देखोगे, भले ये पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग है, बोल्ड होता तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता, बट तब भी बाकी ऑप्शन सूट नहीं कर रहे हैं, तो विल गो विद बोल्डनेस विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड. शेकी इसी का सिनोनिम हो जाएगा, कांपता हुआ. पीस मील का मतलब होता है बिट बाय बिट, पीस बाय पीस, दैट इज पीस मील. प्रोफ्यूज का मतलब होता है अनकंट्रोलेबल, एज प्रोफ्यूज, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, दैट इज प्रोफ्यूज. नेक्स्ट आपको ऑपोजिट बताना है. इवन आफ्टर स्पेंडिंग अ ईयर इन जेल द यंग मैन रिमेन्स इनकॉरिजिबल एंड अनअफ्रेड ऑफ द लॉ. इनकॉरिजिबल का एंटोनिम ट्रैक्टेबल, इनक्योरेबल, हैबिचुअल और परसिस्टेंट. 4 ऑप्शंस. अगेन यू हैव टू गिव मी द एंटोनिम, ऑपोजिट वर्ड. राइट, इनकॉरिजिबल का मतलब याद रखना. ओके, मुझे इनकॉरिजिबल वर्ड इसलिए याद है बिकॉज आई रिमेंबर व्हाइल आई वाज एट स्कूल, टीचर्स हमारे पूरे क्लास को कई बार जब हम हल्ला वल्ला करते थे या बातें करते थे या बदमाशी करते थे, तो टीचर्स आके बोलते दिस क्लास इज इनकॉरिजिबल, मतलब कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा नहीं जा सकता, जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता, दैट्स इनकॉरिजिबल. आई डोंट नो वेदर यू कम अक्रॉस दिस वर्ड. That is incorrigible. That cannot be controlled, cannot be corrected. So antonym अगर देखोगे तो tractable. Tractable का मतलब होता है controllable और manageable. Controllable बोलो या manageable बोलो. Incurable, that which cannot be cured, जिसे cure नहीं किया जा सकता. Habitual, जिसको आदत है किसी चीज को करने की. Okay, जैसे बोलता है habitual offender. हैबिचुअल ऑफेंडर किसे कहा जाता है? जो कोई क्राइम किया, जेल गया, वापस आया, दोबारा क्राइम किया, दोबारा जेल गया, मतलब उसको एक आदत सी बनी हुई है उस क्राइम को करने के लिए, इज एन हैबिचुअल ऑफेंडर, हैबिचुअल क्रिमिनल. परसिस्टेंट का मतलब होता है कंटिन्यूअस, जो चलता रहे, लगातार, निरंतर, रेगुलरली. ओके, दैट इज परसिस्टेंट. ओके, अब याद हो गया आप लोगों को, कभी भूलोगे नहीं. अभिषेक कुंवर, मैंने परसों एक सेशन लिया था बेटा, जिसमें मैंने आपको बताया था हाउ टू स्कोर 70+ इन योर CDS एग्जाम्स. सो सेशन को जरूर देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया था आपको क्या चीजें करने की जरूरत है अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो CDS एग्जाम में. 70+ ही नहीं, आप 90+ इजीली स्कोर कर सकते हो. उसको ध्यान से देखिए. उसके बाद कोई डाउट होगा तो कल मेरे सेशन में आके डाउट पूछना कि ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, अगर कोई डाउट हो तो. ओके, अगला क्वेश्चन है. ब्रेविटी इज एसेंशियल व्हेन यू सेंड अ टेलीग्राम और केबलग्राम. यू आर चार्ज फॉर एवरी वर्ड. सो आपको बताना है ब्रेविटी का एंटोनिम ब्रीफनेस, टर्सनेस, लेंथीनेस, कंपैक्टनेस. आई डोंट नो, आज के डेट में तो टेलीग्राम वगैरह है नहीं गाइस, बिकॉज यू गॉट ईमेल, यू गॉट व्हाट्सएप, यू गॉट ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ जहाँ पे वीडियो कॉल ही कर सकते हैं. बट आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, अगर किसी को कोई
मैसेज भेजना था, उस टाइम तो आपका टेलीफोन भी बहुत रेयर था इनफैक्ट। तो अगर किसी को ऐसे जगह पे जिसके पास टेलीफोन भी नहीं है, कोई एक्सेस नहीं है कम्युनिकेशन का, ऑब्वियसली इंडिया पोस्ट ही था उस टाइम, तो आप या तो खत लिखोगे या टेलीग्राम भेजोगे ना। टेलीग्राम में पर वर्ड के हिसाब से वो चार्ज करते थे पोस्ट ऑफिस में। तो सपोज कोई खुशखबरी है या कोई बुरी खबर है, कोई गुजर गया है, तो टेलीग्राम के द्वारा भेजा जाता था, वो जल्दी चला जाता था, 1 या 2 दिन में अगले को खबर मिल जाती थी तब भी। सो वहां पे पर वर्ड के हिसाब से चार्ज किया जाता था। सो यहां पे सेंटेंस का मीनिंग है ब्रेविटी इज इसेंशियल व्हेन यू सेंड अ टेलीग्राम और केबलग्राम। मतलब शॉर्टनेस, जितना संक्षिप्त, जितना समरी, जितना आप ब्रीफ हो सकते हो उतना आपके लिए जरूरी है टेलीग्राम या केबलग्राम भेजने के लिए, क्योंकि एक एक वर्ड का आपको चार्ज किया जाता है, एक्स्ट्रा पैसे लगते थे हर एक वर्ड के लिए। सो यहां पे अगर आप देखोगे तो ब्रीफनेस इसका सिनोनिम हो जाएगा, टर्सनेस भी सिनोनिम हो जाएगा, लेंथीनेस होगा एंटोनिम, कंपैक्टनेस हो जाएगा सिनोनिम। सो द करेक्ट आंसर इज सी। मोस्ट ऑफ यू वर राइट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगला सवाल ये रहा, रमेश टच्ड इट विद सम ट्रेपिडेशन fearing it change back into previous horrific form। ट्रेपिडेशन का आपको ऑपोजिट बताना है, बोल्ड, काम, फियर और ड्रेडफुल। अगेन एलिमिनेशन ट्रिक से आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ट्रेपिडेशन का मतलब होता है काइंड ऑफ एक प्रकार से डर होना, ओके, विद सम फियर जिसे आप कह सकते हो, और हेजिटेशन और एप्रीहेंशन बोल सकते हो। सो एंटोनिम अगर आप देखोगे तो द एंटोनिम शुड बी बोल्ड। ए इज एब्सोल्युटली राइट, गो विथ ए, गो विथ ए गाइस, ए शुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। काम कुछ लोगों को लगता होगा कि काम हो सकता है, बट वी गो विथ ए बिकॉज बिल्कुल एंटोनिम है। काम का मतलब ठंडा होना, बट बोल्ड और काम में फर्क है। बहादुर दैट इज बोल्ड, ट्रेपिडेशन मतलब होता है फियर, और ड्रेडफुल ये आपका सिनोनिम हो जाएगा, फियर आपका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम शुड बी बोल्ड, वी गो विथ ए, whoever said that was right, good। सिंपल। सेशन को शेयर कर दीजिए फॉर पीपल हु जॉइंड लेट, प्लीज शेयर द सेशन, ताकि और भी लोगों को पता लग सके और वो बेनिफिट कर सके इन सेशन से। अगला सवाल ये रहा, आपको सिनोनिम्स बताना है। She is in that particular position because of her dedication and canny attitude। What should be the synonym of canny? Reactive, intelligent, disciplined or sincere? Canny, 4 options. What do you think should be the answer? Canny का मतलब एक्चुअली में होता है being, आपने कभी ये वर्ड सुना है shrewd, या शार्प विटेड, बहुत ही ज्यादा shrewd, चालाक जिसे कहते हैं, being clever, so that is canny। so canny का अगर आप सिनोनिम देखोगे तो क्या होना चाहिए? what should be the synonym of this particular word? okay, disciplined not exactly, sincere not exactly, we go with intelligent। clever or intelligent, you go with B। a canny attitude or intelligent attitudes in that particular position because of a dedication, canny attitude, intelligent is absolutely right, we go with B। reactive कौन होता है? जो हर एक चीज पे react करे उसे reactive कहते हैं, but that is also not close, the closest one is intelligent। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मीनिंग बताना है इन इडियम्स का। द फर्स्ट इडियम इज लायंस शेयर। व्हाट डज अ लायंस शेयर मीन? टू ईट द प्रे, मेजर शेयर, टू बी एंग्री और टू गेट नथिंग। व्हाट्स अ लायंस शेयर? लायंस शेयर इज अ मेजर शेयर। The eldest son got the lion's share in the property। मान लीजिए कोई फैमिली है जिसके उस फैमिली में कई सारे बच्चे हैं, उनमें से सबसे एल्डर बेटे को या एल्डर
ऑफस्प्रिंग को, he got the lion share, जिसका मतलब he or she got the major share in the property. रोशनी, अभी बेटा मैं आपके ऐप पे शुरू नहीं कर रहा हूँ. कमिंग मंडे, ओके, कम मंडे, दिस मंडे ऑनवर्ड्स आई विल बी टेकिंग सेशंस ऑन द ऐप wherein we'll have interactive quizzes also. Interactive quizzes में आपको भी पता चलेगा where exactly you stand, और आप उसमें और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे. मेरा टाइमिंग ऐसे रहेगा 6:30 to 7:30. अभी टाइमिंग को छोड़ दो, मैं एक बार कंफर्म करके उसके बाद कल तक मैं आपको बताता हूँ. 1 घंटे यूट्यूब पे आऊँगा, 1 घंटे ऐप पे आऊँगा. दैट इज स्टार्टिंग मंडे. थैंक यू गरिमा फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट. Thanks a lot. What makes us happy personally are when you actually clear your exams with flying colors. तब हम लोग को actual satisfaction मिलता है. But thanks for the compliment there. हम अपनी तरफ से पूरा effort लगाते हैं उस चीज़ के लिए. जिसको सबसे कम मिलेगा, तुषार, सबसे कम मिलने वाले को एक शब्द है जिसे हम कहते हैं peanuts. Okay? He got the eldest son or daughter got the lion share and the youngest got peanuts. मतलब बहुत ही कम मिला, तो उस सेंस में लिखा जा सकता है. सुनील, अभी क्लास बेटा आपके 9 बजे तक चलेगा, 7 to 9 फ्राइडे तक. यही हमारा प्लान है इंग्लिश के सेशन का. नहीं रोशनी, डोंट वरी, मंडे से ये क्लियरली हम शुरू करेंगे रेगुलरली ये सेशंस. ओके जी, अगला सवाल. इन अ पिकल का मतलब क्या होता है? इनएक्सपीरियंस, शॉर्ट पीरियड, इन अ ट्रबल और आइसोलेटेड. इफ समवन इज इन अ पिकल, क्या मतलब हुआ इस पर्टिकुलर इडियम का? थैंक यू मनीश्री, थैंक्स फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट देयर. Yes, in a pickle actually means in a trouble, in a difficult situation. कोई बिल्कुल परेशानी में फंसा हुआ है किसी प्रकार के, उसको हम कहते हैं in a pickle, which means in trouble. In trouble, भी मत लिखो, simply say in trouble, that's all. In hot water भी एक idiom है जिसका मतलब भी होता है to be in a difficult situation. In hot water या in a pickle, याद रखना, to be in a difficult situation. Alright guys, next question for you. A hot potato. What is a hot potato? An unopened book. An opened book. Speaking of the current issue, which most of the people are talking about. Get an official reprimand. What is the hot potato today? अच्छा, इनफैक्ट कल रात में 10:30 बजे एक हॉट पोटैटो हुआ था जहाँ पे पूरा ट्विटर उसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा था. एंड almost across all social media, people were discussing that issue. Yeah, that was a hot potato, which was earthquake in the northern part of India. Yeah, northern part and Pakistan, Afghanistan, कई जगह पे आया था. That was a hot potato. In the afternoon, the hot potato was capturing of Amritpal Singh, if you remember. Okay, they were not able to arrest. He was actually giving the authorities a slip. Giving a slip का मतलब क्या होता है? Giving a slip, manage to escape. Okay, giving a slip का मतलब ये भी एक idiom है जिसका मतलब भागने में कामयाब होना. Okay, even I didn't feel. मैं भी फील नहीं किया था. इनफैक्ट मैं अमेजॉन प्राइम में एक मूवी देख रहा था, क्रिमिनल इस मूवी का नाम था. So I was so engrossed in watching the movie, I didn't feel the earthquake at all. जहाँ कि मैं 15th फ्लोर में रहता हूँ, बट 15th फ्लोर में तो अर्थक्वेक आएगा तो मुझे कुछ करना नहीं है, कंबल ओढ़ के सो जाना है, क्योंकि जब तक मैं नीचे पहुंचूंगा, अगर कोई मेजर अर्थक्वेक आया तो नो वन कैन सेव अस. ऑलराइट, एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर गोस. ब्लू मून का आपको मीनिंग बताना है. सोलर एक्लिप्स, रेयर इवेंट, ऑनेस्टी और एंटिसिपेटेड. अच्छा अंकित, कुछ लोग तो नीचे भी नहीं भागते हैं, कुछ लोग छत पे भाग जाते हैं. आई डोंट नो, छत पे जाना भी, कैन इट सेव यू? प्रॉब्ली यस, प्रॉब्ली नो, यू नेवर नो. जो लिखा है दैट्स व्हाट विल हैपन एनीवेज. ओके, ब्लू मून इज अ रेयर इवेंट.
वंस इन अ ब्लू मून का मतलब रेयर इवेंट. ओके, अगर मैं आपसे पूछता हूं डू यू गो आउट ऑफ कंट्री, क्या आप कहते हो यस आई ट्रैवल आउट ऑफ कंट्री वंस इन अ ब्लू मून, मतलब 5-10 साल में एक बार, 15 साल में एक बार आप जाते. दैट इज वंस इन अ ब्लू मून. समथिंग दैट हैपेंस और अकर्स रेयरली इज कॉल्ड वंस इन अ ब्लू मून. अगला सवाल है a drop in the bucket. What does it mean? Fall sick, cause to happen. A very small part of something big or whole or full unity. Drop in a bucket का मतलब it's a pretty simple, pretty easy question. Okay, the correct answer is absolutely right. A very small part of something big or whole that is unimportant. किसी बड़ी चीज का छोटा सा हिस्सा जिसका बहुत ज्यादा चीज बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, दैट इज अनइम्पॉर्टेंट. रोशनी, सेशंस ऑन कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस बेटा वो भी मैं लेके आऊंगा. आई एम इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग मोर क्वेश्चंस. ओके, इन अ कपल ऑफ डेज या मोस्ट प्रॉब्ली बाय नेक्स्ट वीक you'll be coming across a fresh batch of questions completely according to the latest pattern. So I'm working on it. वो भी बहुत जल्दी शुरू होगा. Do not worry. Phrasal verb भी लेके आऊंगा अंकित. Don't worry. Okay. Right. A few fill in the blank questions. She went dash to oblige her superior. Out of her way, with her way, on her way, or in her way. नहीं सुनील, सेशन तो अभी चालू है बेटा. आपके तरफ से कोई इंटरनेट इश्यू होगा, एक बार चेक करिए. बाबू भैया का कमेंट मैं पढ़ लिया. आई गेस यू डिलीटेड इट बट आई स्टिल रेड इट. या दैट वाज फनी. एनीवेज, अगला सवाल. शी वेंट डैश, क्या होना चाहिए इसमें? शी वेंट आउट ऑफ हर वे. एब्सोल्युटली, शी वेंट आउट ऑफ हर वे टू oblige her superior. If you are going out of your way to do something, किसी काम को पूरा करने के लिए, if you are going out of your way, you're putting in more effort. आपकी क्षमता से ज्यादा अगर आपने कोई काम किया है तो you are going out of the way to do something. Okay, like if you remember during the lockdown when the migrants were traveling home, the celebrity, you must be aware of Sonu Sood, he went out of his way to help the migrant laborers. बोला जा सकता है उसने अपने जेब से पैसे डाल के बंदोबस्त किया लोगों को घर भेजने के लिए. सो गोइंग आउट ऑफ द वे इज ट्राइंग पुटिंग इन मोर एफर्ट्स. अपने, हालांकि वो उसके क्षमता में था, बट कुछ लोगों की क्षमता में नहीं होता है, चाहते भी नहीं, दे गो आउट ऑफ द वे टू डू समथिंग. ये मतलब हुआ. Okay, Tina was proud of having paid for her studies dash her own. Off, in, on or at, 4 options should be a simple one for you. क्या होना चाहिए आंसर बताओ. Tina was proud of having paid for her studies. उसको गर्व था कि वह अपने पढ़ाई के लिए खुद से पैसे देती है, probably part time job करके. So Tina was proud of having paid for her studies on her own. C is absolutely right. जिन्होंने C कहा बिल्कुल सही थे. Good. चलो जी, अगला सवाल ये रहा. अंजलि spotted Rahul on the other side of the room and dash him. कुछ लोग कह रहे थे ना phrasal verb, ये phrasal verb पे ही based question है. What should be the answer to this one? Anjali spotted Rahul on the other side of the room and she approached him, went towards him. So the correct answer is bore down on. Bear down on का मतलब होता है to approach or go towards someone. So bear down और bore down ये past में है, इसलिए bore down on लिखा है. Bore down on him मतलब she went towards him, she approached him.
अगला सवाल, Mark and I managed to dash the house before our parents got home. Straighten up, straighten with, straighten by, straighten aside. The meaning of the sentence is, Mark and I managed to put things in order. एप्पल पाई ऑर्डर सुना होगा, ये एक इडियम है. एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब इन परफेक्ट ऑर्डर, एक प्रॉपर ऑर्डर में सारी चीजें करना. सो मार्क एंड आई मैनेज टू स्ट्रेटन अप. यस, ए इज करेक्ट. स्ट्रेटन अप द हाउस बिफोर आवर पेरेंट्स गॉट होम. स्ट्रेटन अप का मतलब सभी चीजों को साफ सुथरा करके सही सलामत अरेंज कर देना. दैट इज स्ट्रेटन अप. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीटिंग वॉज डैश बिकॉज ऑफ द फायर एक्सीडेंट इन द बिल्डिंग. Called in, called off, called back or called out. 4 options. Phrasal verbs में मैं dedicated sessions लाऊंगा guys, don't worry. Phrasal verbs काफी तंग करने वाला. Phrasal verb और preposition, grammar के ये 2 topics हैं जो काफी तंग करते हैं लोगों को. आई नो synonym antonym भी तंग करते हैं, बट वो उन लोगों के लिए जो रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करते. जो प्रैक्टिस रेगुलरली, आपको synonym antonym vocab भी दिक्कत नहीं होगा. Right, the meeting was called off. B is absolutely right, which means cancelled. The meeting was called off because of the fire accident in the building. तुषार, called back नहीं हो सकता बेटा. called back का मतलब होता है ask to return. किसी चीज को वापस बुला लेना, वापस ले लेना. That is called back, which means to withdraw. Okay. Right. Now let's attempt a reading comprehension passage. Reading comprehension passage देख के लोग डर जाते हैं, यार कौन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेगा. बट वैसा अप्रोच कभी मत रखना, बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है. सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जहाँ पे आपको पैसेज पढ़ने की ज़रूरत है एंड यू हैव टू आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट. मैं कुछ देर के लिए वीडियो ऑफ कर देता हूं क्योंकि इसके कारण थोड़ा टेक्स्ट छुप जा रहा है. और वंस यू आर थ्रू विद द पैसेज, थ्रू विद रीडिंग, प्लीज लेट मी नो so that I can move on to the questions. I hope the passage is visible to each one of you there. पैसेज को पढ़ के कमेंट करके बताइए कि सर वी हैव रेड द पैसेज और डन. सो जस्ट सिंपली टाइप इन डन सो दैट आई नो एंड देन वी कैन मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. पढ़ना शुरू करो. आई गिव यू 2 minutes गाइस. Two minutes to read the passage for you. गाइस ध्यान से पढ़ना है. इट्स नॉट जस्ट नॉर्मल रीडिंग. प्लीज ट्राई टू रीड, अंडरस्टैंड and remember the points given or mentioned in the passage. That's what is important. Okay, a few people have read it. I'm waiting for the rest.
Done? Okay, very good. Okay, yeah, a few people must have come across this passage earlier as well, but never mind. एक बार मैं passage को फटाफट पढ़ देता हूँ, then we'll move on to the questions. It says Alaskan polar bears have mastered the art of living in ice. Even during the frigid days of winter, these furry white creatures don't hibernate in cozy dens, as other bears do. Instead, they go north hunting for seals living in the ice-covered water. Okay, hunting for seals in the ice-covered water. Then it says, in recent years, however, Earth's climate has been getting warmer and ice near the poles has been melting. So a new study shows that disappearing ice is changing polar bear behavior. For instance, more than half of pregnant polar bears used to give birth in dens on solid blocks of ice that were floating out at sea. Today, they are digging their dens on or near land. What's the reason? Most of the ice has disappeared, which means it has melted. Studies have shown that 27% of sea ice in the Arctic that stays frozen from year to year has disappeared during the past 30 years. So there's now much less space for dens. Moreover, as warming continues, the remaining ice becomes less stable. These conditions are unappealing to mother polar bears who want a safe place to give birth. A mother polar bear often has 2 cubs at a time. Baby cubs stay with their mothers for more than 2 years. For now, Alaska's polar bears seem to prefer returning to land rather than taking the risk of giving birth on shaky ice. That solution might not work forever, however, especially if the ice keeps melting. What's the bottom line? Polar bears are in trouble. So yes, this is the passage. अब चलते हैं हम questions के तरफ. During frigid winters, Alaskan polar bears don't lie dormant in dens as there's ice-covered water all around, they have mastered the art of living in ice, climate used to become warmer, or all of the above. Right, Ankit, Tushar, the rest who have come across this passage earlier as well, please ensure that आपको 5 में से 5 सारे correct हो answers. Okay? एक भी अगर गलत दिया आपने, फिर मैं बताऊंगा आपको. Okay, anyways, क्या आंसर होना चाहिए इसका? B. Yes, पहले वाले पैराग्राफ पहले सेंटेंस में ही लिखा था During frigid winter, Alaskan polar bears don't lie dormant in dens as they have mastered the art of living in ice. They have mastered the art of living in the ice. So yes, B is correct. Next, change in polar bears behavior is due to. Polar bear के behavior में change क्यों है? Bears hunt for seals in that ice-covered water, staying active even during the frigid winters, melting of ice near the poles, or none of the above. पोलर बेयर के बिहेवियर जो हैं वो चेंज क्यों हुआ? दैट्स द क्वेश्चन. ओके, इट हैज चेंज्ड बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस. वेरी गुड, सी इज करेक्ट. मेल्टिंग ऑफ आइस नियर द पोल्स. वेरी गुड. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, Alaskan polar bears returning to land has increased. Okay, Alaskan polar bears ka returning to land has increased. Why? Why has it increased? There's only 27% of sea ice in the Arctic that stays frozen. Okay. In north, seals population decreasing, making the hunting difficult. C कह रहा है dense on land is a much better place to stay active in frigid winters. और D कह रहा है as warming continues. यहाँ पे जो hidden है that is as. As warming continues, the ice becomes less stable. What should be the answer? कुछ लोग A कह रहे हैं. Only 27% of sea ice in the Arctic that stays frozen. Not exactly. 27% almost पिघल गया है कुछ सालों में. 27% बचा हुआ ये नहीं बोल रहे हैं. 27% पिघल गया है. Okay, so you don't go with A, you go with D. D is correct. As warming continues, the ice becomes less stable. So yes, D is the correct answer. Which word in the passage is the synonym for vanish? Vanish का appropriate synonym बताओ. Conceal, hibernation, disappeared or hidden. Okay. Vanish का मतलब होता है disappeared, गायब हो जाना. That is absolutely right. Vanish. C is correct. Well done. As per the passage, which is not the permanent way out. Passage के हिसाब से इनमें से कौन सा solution permanent नहीं है mother polar bears के लिए या polar bears के लिए?
which is not a permanent solution, which is not a permanent way out. That's the question. Okay, the correct answer is preferring to give birth on land rather than shaky ice is not a permanent solution for mother polar bears. If this keeps happening, gradually polar bears will cease to exist. They will become extinct because they are not meant to live that way. Polar bears land में रहने के लिए बने ही नहीं है. They are meant for living in ice or extreme cold regions near the poles only. Guys, कल मैं बता दूं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स व्हेन इट कम्स टू वेदर चेंजेस. ओके, ये ग्लोबल वार्मिंग के बारे में के कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो मैं 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा. आर्टिकल में ये लिखा था कि हम ऑलमोस्ट एज पे पहुँच चुके हैं. अगर हमने क्लाइमेट चेंज को अब रिवर्ट नहीं किया तो इट विल डू इरिवर्सिबल डैमेज. इसका मतलब उसके बाद बहुत देरी हो चुका होगा. जैसे डॉक्टर कहते हैं ना, अब तो बहुत देरी हो चुकी है, अब इस पेशेंट को बचाया नहीं जा सकता. दैट्स हाउ आवर मदर अर्थ इज नाउ. वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स. अगर आप गौर करोगे कि आई डोंट नो आपके स्टेट्स या सिटीज़ में कैसा है, बट द नॉर्दर्न रीजन विच इज़ इन दिल्ली एंड एनसीआर वेयर आई लिव, मार्च में पीपल आर एक्चुअली वेयरिंग जैकेट्स एंड ट्रस्ट मी, ये ऐसा सीज़न था जब गर्मी आ चुकी होती है काफ़ी हद तक, लोगों की एसीज ऑन हो जाते हैं घरों पे. बट इस साल ये जो ये कोल्ड आ रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वगैरह हो रहा है, दिस इज़ एक्चुअली स्ट्रेंज. हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो जनरली होता है, बट दिस डजंट अकर ड्यूरिंग दिस पार्ट ऑफ द ईयर. सो यस, ठंड हो गई एंड क्लाइमेट इज चेंजिंग. तो ग्लोबल वार्मिंग का यही मतलब नहीं है कि हमेशा आपको गर्मी फेस करना पड़ेगा, पूरा अर्थ गर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है. क्लाइमेट चेंजेस, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश, कहीं बहुत ज़्यादा ठंड, कहीं बहुत ज़्यादा एराटिक वेदर चेंजेस जिसे कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड. सो वी ऑल शुड बीवेयर एंड आई होप द अथॉरिटीज टेक नोटिस ऑफ दिस. ओके, बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अभी देयर आर सेवरल क्वेश्चंस टू गो. मैं आपको बता दूं, देयर इज अ फ्लैट 40% प्लस 35% ऑफ 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी. Okay, it is the Navratri sale which is from the 21st to 23rd. So tomorrow is the last day for this particular sale. You can also get a chance to win free Vaishno Devi Darshan trip. Okay, you have to use this code JOSH to avail additional discount. ये कोड यूज करोगे तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा. This is the current course fee 14,999, but after discounts this is 5,914. You also get 6 plus 3 months additional subscription. So do not wait, people preparing for the next season. Do ensure that you enroll yourselves. चलो जी, अगला सवाल. Let's attempt a few jumbled sentences, जिसे हम कहते हैं rearrangement. Parajumbles बोलो, jumbled sentences बोलो. There are several names to this. PQRS बोलो. आपको सेंटेंस को रीअरेंज करना है और बताना है what should be the order. So here is the question for you. ध्यान से पढ़ो एंड बताइए इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए. चलो जी, शुरू हो जाओ. रीड इट. PQRS. सारे सेंटेंसेस जम्बल्ड हैं, रीअरेंज करके बताइए व्हाट शुड बी द आंसर. कई लोगों को ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कतें होती हैं, बट इसमें घबराने की कोई बात नहीं. अगेन, वंस यू रीड ऑल द सेंटेंसेस, you get a fair idea as to what the paragraph is trying to convey.
जब सभी सेंटेंसेस को पढ़ते हो आपको एक आइडिया मिलता है कि पैराग्राफ आपको क्या बताना चाह रहा है, एंड देन यू विल एक्चुअली टेक सटल हिंट्स एंड यू कैन एक्चुअली टेक हिंट्स फ्रॉम ऑप्शंस टू रीअरेंज देम। कई लोगों का आंसर आया QSRP, अच्छा ए और बी में कंफ्यूजन है लगता है। एनीवेज देख लेते हैं। पी कह रहा है इफ इन्फ्लेशन बिकम्स रैपिड इनफ कंज्यूमर्स कैन इवन बिगिन होल्डिंग। इफ से तो आप शुरू नहीं करोगे। क्यू कह रहा है इन्फ्लेशन अफेक्ट्स इकोनॉमीज इन वेरियस पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव वेज। बिल्कुल क्यू शुरू में आ सकता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेनिफिट नॉट रिसीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेलेक्टिंग द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन। शायद आर से शुरू नहीं होगा। एस कह रहा है द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन इंक्लूड एन इंक्रीज इन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी। नाउ यहां पे मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख रहा हूं, दिस इज अ कीवर्ड फॉर मी, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बताया गया है आर में, तो आई स्ट्रांगली फील दैट एस एंड आर इज अ कंपल्सरी पेयर। एस और आर एक साथ आना चाहिए, इतना मुझे फील होता है। कितने ऑप्शन में एस आर एक साथ है? एक ही ऑप्शन में है, सॉरी दो ऑप्शन में है। सो आइदर बी और डी, दोनों को पढ़ के देख लें। बी कह रहा है QSPR इन्फ्लेशन अफेक्ट्स इकोनॉमीज इन वेरियस पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव वेज। द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन इंक्लूड एन इंक्रीज इन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी। So the opportunity cost is the benefit not received as a result of not selecting the next best option. If inflation becomes rapid enough, consumers can even begin hoarding. Yeah, we go with B. QPSR कैसा है? Q then P. Inflation affects economies in various positive and negative ways. If inflation becomes rapid enough, consumers can even begin hoarding. Okay. Then you put S, the negative effects. Okay. QPSR. QPSR कितने लोगों को लगता है QPSR हो सकता है? नहीं, दिस इज एक्चुअली द कंक्लूडिंग सेंटेंस ओनली गाइस। QSR एक्चुअली में एक साथ आना चाहिए। P को आप कंक्लूजन में लिखोगे इफ इन्फ्लेशन बिकम्स रैपिड इनफ कंज्यूमर्स कैन इवन बिगिन होल्डिंग। ओके, ये कंक्लूड कर रहा है अगर इन्फ्लेशन ऐसा हो गया तो लोग होल्डिंग भी कर सकते हैं। तो कंक्लूडिंग सेंटेंस वी गो विद बी ओनली। बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, गो विद बी। अगला सवाल ये रहा, read the question and tell me what should be the answer for this one. Again PQRS, rearrange करके बताओ। Whosoever thought D, वाजिब आपको D भी लग सकता था, no problem, but let me tell you सेंटेंस के पैसेज पैराग्राफ के मीनिंग के हिसाब से D एक कंक्लूडिंग सेंटेंस है, इस कारण से हमने लास्ट में लगाया उसे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्रोनोलॉजी समझिए, लॉजिक समझिए, इट रियली बिकम्स इजी फॉर यू टू गेट टू द करेक्ट आंसर देन। इट इज मार्केटिंग फॉर देयर प्रोड्यूस, क्या पी से शुरू हो सकता है? नहीं। देयरफॉर अ स्मूथ, नहीं। इन द एब्सेंस ऑफ दैट, नहीं। द की कंसर्न इन रूरल इंडिया इज नॉट द प्रोड्यूस, यस यू स्टार्ट विद एस। कितने ऑप्शन एस से शुरू हो रहे हैं? 2। द की कंसर्न, मेन प्रॉब्लम जो रूरल इंडिया में है वो प्रोड्यूस नहीं है। प्रोड्यूस मतलब प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वो आपका की कंसर्न नहीं है, मेन प्रॉब्लम नहीं है। द मेन प्रॉब्लम क्या है? The key concern is marketing for their produce. So yes, SP is correct. Marketing for their produce. ठीक है, मार्केटिंग करना उसका की कंसर्न या की प्रॉब्लम है। उसके बाद आप लिखोगे Q, therefore, इसलिए a smooth agri supply chain function across states needs to be enabled. एकदम स्मूथ एग्री सप्लाई चेन की जरूरत है इस कारण से।
Or in the absence of that, the perishables, that is fruits and vegetables in particular, would suffer the most. अगर ये स्मूथ एग्री सप्लाई चेन नहीं रहा तो पेरिशेबल्स जो होते हैं, पेरिशेबल्स जो बहुत दिन तक रहते नहीं है, सड़ने लगते हैं, दोज आर पेरिशेबल्स. और फ्रूट्स वेजिटेबल्स पर्टिकुलरली अगर स्मूथ एग्री सप्लाई चेन नहीं रहा तो पेरिशेबल्स सबसे ज्यादा खराब होने लगेंगे. सो यस, SPQR-B इज करेक्ट. अगला सवाल ये रहा, ध्यान से पढ़ो एंड आंसर दिस वन. एग्जाम्स में गाइस सोच समझ के अटेम्प्ट करना. यू हैव टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, जो कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपका डिडक्ट होता है फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन. सो ऐसा नहीं है कि रीअरेंजमेंट पूरे का पूरा छोड़ दिया 10 के 10 क्वेश्चन. क्यों छोड़ा भाई? क्योंकि लोगों को लगता है इतना लंबा लंबा क्वेश्चन कौन पढ़ेगा. अगर स्ट्रांगली मैं आपको बताऊं सीरियसली कि ये सब इजीली स्कोर करने वाले टॉपिक्स होते हैं. रीअरेंजमेंट, आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, ये सब को छोड़ के मत. अगर दूर दूर तक कोई डाउट नहीं है तब तो छोड़ ही दो. लेकिन अगर आपको लगता है कि इसका रीअरेंजमेंट मैं कर सकता हूं, एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ के आपको आइडिया समझ में आता है. ओके, सो पी कह रहा है इट कंसिस्ट ऑफ 200 to 300 पर. द पर्पस इज टू कम्बैट. इंडियन एयरफोर्स हैज क्रिएटेड 9 क्वारंटीन facilities. So the correct answer should be R से शुरू होगा. The Indian Air Force has created 9 quarantine facilities. Facilities की बात करी. The facilities are spread across the country at IF's nodal basis. It consists of 200 to 300 personnel capacity each. Okay, facilities nodal basis में 200 to 300 personnel capacity है. The purpose to combat the nationwide outbreak of the novel coronavirus. Yes, we go with A. RSPQ is absolutely right. Good. अगला सवाल ये रहा, PQRS jumbled. What should be the order? You have my Telegram channel ID on top of the screen, which is at @IRSir_TV. You can join that Telegram group so that you get updates about my sessions as well. Please ensure that you join that particular group as well, people. Okay, should be a simple one. Paintings, drawings and sculptures are a few that come to mind. Some things are easy to identify as art, but से तो शुरू नहीं होगा. So, some things are easy to identify as art. You go with Q. Okay? Paintings, drawings and sculptures are a few that come to mind. QP. But art also includes many other forms of expression. Art can be music, drama and writing. So A, QPRS is absolutely correct. Well done. Simple, not very difficult. अगला सवाल ये रहा. Read this and answer. Tushar, Akriti are saying PRSQ, which means C. Okay. PRSQ. Bang on. You hit the jackpot. PRSQ is absolutely right.
Today's gamers expect lifelike video games with best graphics possible. Then you put R, characters are expected to move like real people. S, and objects are usually expected to loosely follow the laws of physics. And Q, lastly, settings must look like the real world. PRSQ, absolutely right. I'm sure most of you must be playing games on a daily basis or on a regular basis. But इतना भी ज़्यादा मत खेलिए कि एग्जाम्स का प्रैक्टिस मिस हो जाए. ओके, एक बार एग्जाम क्लियर हो जाए उसके बाद आप आराम से खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. इनफैक्ट अगर आप पबजी वगैरह खेलते हो या शूटिंग गेम्स खेलते हो तो वो रियल लाइफ में ही आपका हो जाएगा वंस यू आर कमीशन्ड एज ऑफिसर्स. सो यू विल एंजॉय दैट, गेट अ लॉट ऑफ एडवेंचर. अब आते हैं क्लोज टेस्ट पैराग्राफ. ओके गाइस, ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट आई एम मेकिंग यू प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट. सो हियर इज अ क्लोज टेस्ट पैराग्राफ. सबसे पहले इस पैराग्राफ को पढ़िए, अंडरस्टैंड, एंड देन वील मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. पैराग्राफ शुरू यहां पे हो रहा है. फटाफट पैराग्राफ को पढ़ो एंड टाइप इन डन इन द कमेंट सेक्शन. देन वील मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. फटाफट पढ़ के बताओ. ऑप्शंस मैं अभी नहीं दिखा रहा हूं. एक बार आप सारे पैसेज को ढंग से पढ़ लोगे, उसके बाद मैं ऑप्शंस दिखाऊंगा, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम उसे. पढ़ लिया सबने? You want more time? Okay, good. कई लोगों ने पढ़ लिया. I'll read the passage once and then I'll move on to the questions. It says, to be an effective manager, you need to dash skilled at giving both praise and criticism. Although it can be dash to criticize, it's essential for your team dash to know how they can improve. There's no one right way to dash feedback, because the one giving feedback and the one receiving it dash unique in temperament, in emotional intelligence, and in how they dash information. Still, there are a few actions that anyone dash gives feedback should consider to improve the odds for a successful outcome. Studies show dash people who work in a people that emphasizes what is going right to perform dash. One metric suggests that good managers give 5 times more praise dash criticism. Simple. Here is the first blank for you. It says, to be an effective manager, you need to dash skilled at giving both praise and criticism. Should be an easy one. ये तो बिना ऑप्शन देखे ही आप आंसर कर सकते थे. What should be the answer?
You should be. Very good. To be an effective manager, you need to be skilled at giving both praise and criticism. बहुत ज़्यादा difficult तो नहीं था. अगला blank. Although it can be dash to criticize. Although मतलब हालांकि it can be dash to criticize. Easy to criticize आसान होता है. Informal formal नहीं होता. Contented या uncomfortable. Contented मतलब satisfied. Uncomfortable का तो meaning जानते हो. बहुत अच्छा नहीं लगता. That is uncomfortable. क्या होना चाहिए? अगर आप मैनेजर हो तो इट विल नॉट बी इजी टू क्रिटिसाइज. यू से अच्छा अगला लाइन भी पढ़ लो तो शायद आपको आंसर सही पता चले. ऑल्दो इट कैन बी डैश टू क्रिटिसाइज, इट्स एसेंशियल फॉर योर टीम डैश टू नो. ऑल्दो इट कैन बी डैश टू क्रिटिसाइज. आप मुझे इतना बता दो कि इस ब्लैंक में क्या पॉजिटिव वर्ड आएगा या नेगेटिव वर्ड आएगा. पॉजिटिव या नेगेटिव वर्ड क्या लगता है? हालांकि आपको क्रिटिसाइज करना, हाँ नेगेटिव वर्ड आएगा. विच मीन्स यहां पे आप अनकंफर्टेबल लिखो. ऑल्दो इट कैन बी अनकंफर्टेबल टू क्रिटिसाइज. आसान नहीं होता क्रिटिसाइज करना. काफी लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं किसी की निंदा करने में. सो ऑल्दो इट कैन बी अनकंफर्टेबल टू क्रिटिसाइज, लेकिन ये एसेंशियल है, जरूरी है. ऑल्दो इट्स अनकंफर्टेबल टू क्रिटिसाइज, इट्स एसेंशियल फॉर योर टीम डैश टू नो हाउ दे कैन इंप्रूव. अटैचमेंट्स, लिंक्स, मेंबर्स, राइवल्स. Correct answer is, it is essential for your team members to know how they can improve. It's essential for your team members to know how they can improve. C is absolutely correct. बहुत ज़रूरी है आपके टीम मेंबर्स को ये जानना कि वो improve कैसे कर सकते हैं. तो C is correct. Team members. Good. There is no one right way to dash feedback because the one giving feedback. Say, give, happen or be should be easy. There is no one right way to give. Very good. B is correct. There is no one right way to give feedback. To give feedback is correct. सही तरीका, कोई एक सही तरीका नहीं है फीडबैक देने का. Because the one giving feedback, क्योंकि जो फीडबैक दे रहा है and the one receiving it, जो फीडबैक ले रहा है, it dash unique in temperament. ओके जो दे रहा है और जो ले रहा है वो दोनों ही यूनिक होते हैं टेम्परामेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस में. इज, एम, आर और वॉज. सोच समझ के बताइएगा. इस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कितने लोग हैं? द वन गिविंग फीडबैक एक, एंड द वन रिसीविंग इट दो. तो क्या होगा? इज, एम, आर और वॉज? आर. सिंपल लॉजिक. आर यूनिक इन टेम्परामेंट. वो दोनों ही यूनिक होते हैं टेम्परामेंट, अपनी अपनी सोच में. इमोशनल इंटेलिजेंस में भी अलग होते हैं. पता नहीं कैसे रिसीव करेगा वो जो भी फीडबैक ले रहा है. एंड हाउ दे डैश इंफॉर्मेशन. किन किन चीज़ों में अलग है? टेम्परामेंट में अलग होते हैं, जो दे रहा है जो ले रहा है दोनों. इमोशनल इंटेलिजेंस दोनों का अलग हो सकता है, जो फीडबैक दे रहा है जो ले रहा है. इसके अलावा किस चीज़ में वो अलग हो सकते हैं? एंड हाउ दे डैश इंफॉर्मेशन. डेवलपमेंट, मेथड, प्रैक्टिस और प्रोसेस. वेरी गुड. द करेक्ट आंसर इज डी. एंड हाउ दे प्रोसेस इंफॉर्मेशन. इन सभी चीज़ों में वो अलग होते हैं. हाउ दे प्रोसेस इंफॉर्मेशन. ओके इन सभी चीज़ों में ये अलग होते हैं, जो फीडबैक दे रहा है और जो ले रहा है. स्टिल देर आर अ फ्यू एक्शंस दैट एनीवन डैश गिव्स फीडबैक considers होना चाहिए, considers to improve the odds for a successful outcome.
Still, there are a few actions that anyone dash gives feedback. Why, what, who, or when? Pretty simple one. Anyone who, very good. Anyone who gives feedback considers to improve the odds for a successful outcome. Very good. Studies show dash people who work in a place. On that, as or is. क्या होना चाहिए? Studies show that people who work in a place. Studies show that people who work in a place that emphasize what is going right perform dash worse, better, lower, inferior. स्टडीज ने यह दिखाया है कि अगर आप लोगों को बताते हो कि क्या खराब चल रहा है और क्या सही चल रहा है, लोगों को अगर अपने परफॉर्मेंस के बारे में पता चले तो लोग और भी कैसे काम करते हैं. दे टेंड टू परफॉर्म व्हाट इज गोइंग राइट, परफॉर्म बेटर. वेरी गुड, बी इज करेक्ट. भाई मैं कह रहा हूं बार बार, मीनिंग समझोगे पैसेज का तो काफी आसान हो जाता है. इसलिए मैं रेगुलर रीडिंग पे एम्फसाइज करता हूं टाइम एंड अगेन. इफ यू रीड रेगुलरली, these questions will become a cakewalk for you. You can easily solve such questions. One metric suggests that good managers give 5 times more praise dash criticism. 4 options. Simple one. क्या होना चाहिए बताओ? Than, very good. Comparison, more praise than criticism. Simple. चलो जी, अब आते हैं कुछ again fill in the blank. Select the most appropriate conjunction for the blank. Hardly had the bus stopped dash. Before we got down, then we got down, when we got down, as we got down. क्या होना चाहिए? हार्डली के साथ कोरिलेटिव कंजंक्शंस आपने पढ़ा होगा जो हमेशा पेयर्स में आते हैं, लाइक आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर देन, हार्डली व्हेन, स्कार्सली व्हेन. सो हार्डली के साथ क्या आएगा? व्हेन. हार्डली हैड द बस स्टॉप्ड व्हेन वी गॉट डाउन इज करेक्ट. ए इज एब्सोल्युटली राइट. अगला सवाल. They said the operation had been successful and they expected his wife to dash. Pull out, pull through, pull about, pull in. Hello Nandita Nayak, आपका स्वागत है. Welcome from Orissa. That's a great, wonderful state. Although I haven't been there, but I've heard of several things about the state. I hope to go there once for sure. Jagannath Mandir, Puri, Rourkela, and there are several places of visit. I actually happen to be a traveler. मैं जब भी टाइम मिलता है I go to offbeat remote places. And India में ही इतनी सारी जगहें हैं जहाँ पे आप explore कर सकते हो, बहुत ही offbeat places. So yeah, I plan to visit there once for sure. Chilka Lake, yes, that's also one major tourist attraction. Okay. यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा पुल थ्रू. ओके, मैनेज टू कम आउट ऑफ अ डिफिकल्टी. जनरली तबीयत खराब हो किसी की और किसी कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो या तबीयत खराब हो, तब हम पुल थ्रू का यूज करते हैं. ओके, मैनेज टू रिकवर. पुल थ्रू का मतलब मैनेज टू रिकवर फ्रॉम अ डिजीज, इलनेस और एन ऑपरेशन. So they said the operation had been successful and they expected his wife to pull through, which means expected his wife that she will manage to recover. बिल्कुल सही. अगला सवाल. The boy dashed from the kidnappers was handed over to his parents. Being rescued, debates, having rescued, having been rescued. क्या होना चाहिए बताइए.
ओके, द करेक्ट आंसर इज इंडीड डी। गाइस ये पैसिव वॉइस में है। छोटा सा लॉजिक या कॉन्सेप्ट समझ जाइए। हैविंग प्लस V3, दिस इज एक्टिव वॉइस। हैविंग डन द वर्क आई डिसाइडेड टू प्ले, मतलब किसी काम होने के पश्चात, किसी काम होने के बाद। हैविंग वॉश्ड द क्लोथ्स आई डिसाइडेड टू गो आउट फॉर डिनर। Having completed the session, I had dinner, मतलब सेशन कंप्लीट करने के बाद। Having washed the clothes, कपड़े धोने के बाद। वहीं अगर having आ जाए प्लस been आ जाए प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये सेम चीज पैसिव वॉइस में हो जाता है। जैसे the clothes having been washed, the clothes having been washed, I decided to go out. और the class having been completed, वैसे ही the boy having been rescued, बॉय को रेस्क्यू कराए जाने के बाद it was handed over to his parents, the boy was handed over to his parents. किडनैपर से बचाने के पश्चात के बाद। तो इस चीज को याद रखना, कभी कॉन्सेप्ट भूलोगे नहीं। ओके, याद रखना। नंदिता, इसका पीडीएफ बेटा मैं अगेन इंक्वायर करके ही बता सकता हूँ कि सेशन का पीडीएफ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना, अगर पीडीएफ होता है तो गुड। बट इतना मेरे को जहाँ तक लगता है ऐप पे जो सेशंस होंगे उसके पीडीएफ तो मिलेंगे। लेकिन आपको पीडीएफ की ज़रूरत आखिर है क्यों? आपके पास तो सारे क्वेश्चंस और सारे एक्सप्लेनेशंस वीडियो फॉर्मेट में ही है, एब्सोल्युटली फ्री। जितनी बार भी आप देखना चाहते हो यूट्यूब में जाओ या ऑफलाइन डाउनलोड करके रखो एंड डू वॉच इट a number of times as you want. Okay, अगला सवाल। The stick was thin dash it was strong, but even since or in case, क्या होना चाहिए बताइए? Yeah, Nandita, I'll inquire about that. If that can be provided, we'll see. ज्वाइन द ग्रुप फर्स्ट, जो भी टेलीग्राम ग्रुप मैंने ऊपर आपका आईडी दिया है उसमें ज्वाइन करिए। आई ट्राई टू प्रोवाइड द पीडीएफ्स फॉर सच सेशंस। द स्टिक वाज थिन बट इट वाज स्ट्रॉन्ग। ओके, स्टिक वो बहुत पतली थी लेकिन स्ट्रॉन्ग थी। जैसे बांस का जनरली होता है, काफ़ी पतला होता है, हो सकता है मोटा भी होता है, बट स्ट्रॉन्ग काफ़ी होता है। ओके, ही वन द रेस dash he was much older than the others, even though, since, that or if. Yeah, very good अंकित गुप्ता। कॉन्ट्राडिक्टरी में आप but या however का प्रयोग करोगे, वैसे ही वहां पे यूज किया गया है। He won the race even though, very good, वह रेस जीत गया इसके बावजूद कि वह दूसरे से काफी ओल्डर था, बूढ़ा था, लेकिन उसके बावजूद वह रेस जीत गया। तो इवन दो इज एब्सोल्युटली करेक्ट मीनिंग के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव हर अ टेलीफोन नंबर डैश शी गेट्स लॉस्ट, परहैप्स, इन केस, दो और सिंस। Give her a telephone number in case she gets lost is absolutely right. अगर वह कहीं गुम न जाए इसलिए उसको एक टेलीफोन नंबर दे दो। Give her a telephone number in case she gets lost. B is correct. Perhaps मतलब होता है probably, शायद। दो मतलब उसके बावजूद। Since का मतलब होता है क्योंकि, because की जगह पे since लिख सकते हैं। Would you like to play badminton dash football? So, and, or which, or. Perhaps का मतलब होता है probably. अंकित गुप्ता पूछ रहे हैं why not perhaps? Give her a telephone number. Perhaps she get lost. टेलीफोन नंबर दे दो, शायद वह गुम जाए। Perhaps actually उस केस में लिख सकते हो
अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं विल इट रेन टुमारो, आप कहते हो परहैप्स, मे बी के सेंस में, तो यहां पे ज्यादा अप्रोप्रिएट इन केस होगा। टेलीफोन नंबर इसलिए दे दो कि वह कहीं लॉस्ट हो गई तो, ओके, सो इसलिए इन केस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग के हिसाब से। ओके, यहां क्या होगा, वुड यू लाइक टू प्ले बैडमिंटन, और वेरी गुड, मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड इट ऑलरेडी। वुड यू लाइक टू प्ले बैडमिंटन और फुटबॉल इज करेक्ट, डी। Right, a few error spotting questions. Again, identify which part has the error. Is that visible to all of you? Yes, I hope. He was already perfectly cured from his former faults and was ready for all that was good. Most probable, हाँ बोल सकते हो, perhaps means something which is most probable. ए पार्ट में, यस वही मैं बता रहा हूं, एरर एक्चुअली में ए पार्ट में ही है। ही वॉज ऑलरेडी परफेक्टली क्योर्ड फ्रॉम नहीं, आप लिखोगे क्योर्ड ऑफ। क्योर जो शब्द है, किसी चीज से आप ठीक हो जाते हो, ही वॉज क्योर्ड ऑफ द डिसीज। द डॉक्टर्स कुड नॉट क्योर हिम ऑफ कैंसर। क्योर के बाद ऑफ लिखते हो, किसी चीज से ठीक होना। लेकिन क्योर फॉर कब लिखते हो? डू यू हैव अ क्योर फॉर कैंसर? कैंसर के को ठीक करने के लिए कोई दवाई है तो दैट इज क्योर फॉर, मेडिसिन फॉर समथिंग, बट यू आर क्योर्ड ऑफ अ डिजीज। याद रखना है इस चीज को। मेडिसिन बोलोगे तो क्योर फॉर समथिंग, क्योर फॉर अ डिजीज दैट इज मेडिसिन। क्योर ऑफ अ डिजीज, किसी डिजीज से ठीक हो जाना। सिमिलरली यहां पे फॉल्ट से क्योर ऑफ समथिंग, क्योर्ड ऑफ, उस चीज से ठीक कर दिया गया या हो गया, उस सेंस में लिखा है। अगला सवाल, जन्नत इज द मोस्ट टैलेंटेड and also the very beautiful actress of the television. Which part has the error? A, B, C, D. थोड़ा सा अगेन छुप गया है ये पीछे, जरा ठीक करूं। Alright, what should be the answer? Yes. Jannat is the most talented. याद रखना, whenever you mention multiple adjectives in a sentence, एक सेंटेंस में जब मल्टीपल एडजेक्टिव्स होते हैं, कई सारे एडजेक्टिव्स होते हैं, तो ऑल द एडजेक्टिव्स शुड बी इन द सेम डिग्री। सो जन्नत इज द मोस्ट टैलेंटेड एंड ऑल्सो द मोस्ट ब्यूटिफुल। जन्नत इज द मोस्ट टैलेंटेड and also the most beautiful actress of the television. C. Okay, C part, absolutely right. बिल्कुल सही तुषार। Cured of COVID, cannot say cured from. Cured of a disease, cured of COVID. Many people are cured, were cured, or are cured of COVID is right. The number of players accused of taking prohibited drugs are increasing day by day. Which part has the error? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट गाइस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ओके, बता दूं यहां पे द नंबर जो है, दिस इज एक्चुअली द सब्जेक्ट।
ऑफ प्लेयर्स अक्यूज्ड ऑफ टेकिंग प्रोहिबिटेड ड्रग्स, यहां से यहां तक इसे हम कहते हैं फ्रेज, ऑफ से लेके ड्रग्स तक। सब्जेक्ट नंबर है तो नंबर के हिसाब से आर लिखेंगे क्या? नहीं, द नंबर इज इंक्रीजिंग, द नंबर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, एरर इज इन पार्ट सी, द नंबर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इज राइट। सिंपल वन। अगला सवाल, कौन से पार्ट में एरर है? कॉफी ओवर टी इज वेरी मच इनफ फॉर मी इन द ब्रेकफास्ट। कौन से पार्ट में एरर है? Okay, here the error lies in part C. Very much लिखने की जरूरत ही नहीं है, simply say coffee over tea is enough for me in the breakfast. Okay, you don't have to write very much. Enough generally एक प्रकार का ऐसा आपका एडजेक्टिव है, okay, जो आपको ऑलरेडी उस डिग्री को बताता है, तो वेरी मच वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली से इट इज इनफ फॉर मी। ओके, दिस इज कॉल्ड सेंटेंस इंप्रूवमेंट गाइस। डिटरमिन द बेस्ट वे टू इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, सिलेक्ट डी एज नो इंप्रूवमेंट। जो भी हाईलाइटेड या अंडरलाइंड पार्ट है उसके लिए आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन सिलेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। नाउ कई बार ऐसा भी होता है, द सेंटेंस इज ऑलरेडी ग्रामेटिकली एंड लॉजिकली करेक्ट, स्टिल यू हैव टू इम्प्रूव। जो भी ऑप्शन आपको लगता है कि सेंटेंस को इम्प्रूव कर देगा, यू गो विद दैट ऑप्शन। तो यहां पे क्या होना चाहिए? 4 ऑप्शंस फॉर यू। ओके, नाउ यस, सम ऑफ यू हैव आंसर्ड दिस करेक्टली। कभी भी सेंटेंस में हैज, हैव या हैड आता है। व्हेनेवर अ सेंटेंस हैज, हैव और हैड, इसके बाद हमेशा आप क्या लिखते हो? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, V3। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज करेक्ट। सो द कस्टम हैज टेकन रूट इन द सोसाइटी, बी इज एब्सोल्युटली राइट। टुक क्या है? सेकेंड फॉर्म। टेक क्या है? फर्स्ट फॉर्म। टेक्स क्या है? फिफ्थ फॉर्म। बट यहां पे थर्ड फॉर्म लिखना है, सो हैज टेकन रूट। नेक्स्ट, माई अंकल एंड मेंटर आर हेल्पिंग मी। ये अंडरलाइन पार्ट के लिए कौन सा आंसर सही होगा बताओ? माई अंकल एंड मेंटर कितने लोग हैं? द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर is coming या are coming? The chairman and managing director is coming या are coming? Obviously is the एक बार लिखोगे तो एक ही व्यक्ति है, वहीं मैं लिखूं the chairman and the managing director, 2 लोग हो जाएंगे। Similarly यहाँ पे my uncle and mentor, I am referring to just one person, एक ही व्यक्ति है जो मेरा अंकल भी है और मेंटर भी है, तो आर नहीं, आप लिखोगे is। My uncle and mentor is helping me. Me अंडरलाइन नहीं होना चाहिए था, बट ये दोनों अंडरलाइन होना चाहिए। My uncle and mentor is helping me. B is correct. Okay, एक ही व्यक्ति। Okay, identify। कौन सा पार्ट हाईलाइटेड है? Had you been told of me? Okay. ये वाला हाईलाइटेड है। यहां तक इस हाईलाइटेड पार्ट के लिए क्या लिखोगे? हैड यू बीन टोल्ड मी अबाउट योर प्रॉब्लम, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। हैव यू टेल, यू हैव टोल्ड, हैड यू टोल्ड और नो इंप्रूवमेंट। Okay, very good, most of you are right. Had you told me about your problem, I would have helped you. Had you told, had plus subject
plus V3 is equal to if plus subject plus had plus V3. अगर मैं कहता हूं if I had studied hard I would have passed, if I had studied hard I would have passed, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, had I studied hard I would have passed. So had you told me about your problem, had you told, यहां तक highlighted होना चाहिए था, had you told me about your problem I would have helped you. had you told me का मतलब यही हुआ if you had told me, if you had told me about your problem I would have helped you. Okay, identify the error. Which train did you catch? When are you reach? Should be a simple one. Which part do you think has the error here? Okay, which train did you catch and when are you reach नहीं आप लिखोगे when did you reach. Which train did you catch and when did you reach? So error is in part C, simple past. कौन सा ट्रेन तुमने पकड़ा था और कब तुम पहुंचे थे. C. Right guys, active passive voice. The sentence, change the sentence to the एक्टिव और पैसिव वॉइस, जिस भी वॉइस में उस हिसाब से चेंज करना है आपको. द प्ले इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय मोस्ट ऑफ द क्लास दिस ईयर. सेंटेंस कौन से वॉइस में है बताना जरा. विच वॉइस इज द सेंटेंस इन. Passive, very good. Which tense is being performed? Present continuous passive voice. Okay, present continuous passive voice. इसको active कैसे करोगे. Most of the class is performing the play this year, so yes, A is correct. Most of the class is performing the play this year. अगला सवाल, who taught you biology? What should be the passive voice? सिंपल पास्ट टेंस पैसिव बताओ. वर्ब फॉर्म्स अगर आप जान जाओगे तो उसके हिसाब से आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो एक्टिव पासिव. Who taught you biology? The correct answer is indeed. By whom were you taught biology? That's right, B. ऐसे भी लिख सकते हो by whom was biology taught to you. by whom was होना चाहिए था, यहाँ पे अगर was होता तो ये भी हो सकता था. by whom was biology taught to you? That's also one way. Call in the next student. This is an order. ऑर्डर में जब भी ऑब्जेक्ट दिया जाता है, एक्टिव पैसिव वॉइस में जब भी ऑर्डर में ऑब्जेक्ट दिया जाता है तो पैसिव में लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म. कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बताओ. कॉल इन द नेक्स्ट स्टूडेंट. द करेक्ट आंसर इज लेट द नेक्स्ट स्टूडेंट बी कॉल्ड इन. बी देखो, बी लेट आ गया, नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है ऑब्जेक्ट, क्या लिखा आपने बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड इन. सिंपल. हैज ही रिसीव्ड द प्राइज. सॉरी, लेटर. हैज ही रिसीव्ड द लेटर. व्हाट शुड बी द पैसिव. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाओ.
क्या होना चाहिए? Correct answer is, has the letter been received by him? Has the letter been received by him? B is absolutely right. Has the letter been received by him? चलो जी, इम्प्रूवमेंट, जो अंडरलाइन पार्ट है उसको आपको इम्प्रूव करना है. जरा सा इसको ठीक कर लूं, थोड़ा सा टेक्स्ट छुप रहा है नीचे. चलो, answer this one. You cannot forbid him going to the college trip with his friends. Forbid him from going, forbid him by going, forbid him to go, or no improvement. गाइज, एक चीज अच्छी तरह याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल. फॉरबिड जब भी आता है ना, फॉरबिड के बाद आप टू इन्फिनेटिव लिखते हो, 2 + V1. ओके, आई विल फॉरबिड हिम टू गो, मतलब मैं उसे जाने से रोकूंगा. सी इज करेक्ट, इसमें आंसर भी गलत है. यू कैन नॉट फॉरबिड हिम टू गो टू द कॉलेज ट्रिप विद हिज फ्रेंड्स. You cannot forbid him to go. Forbid him to go, याद रखना. prevent हो या stop हो, ये सब के साथ from going लिख सकते. You cannot prevent him from going. You cannot stop him from going. But forbid एकलौता ऐसा शब्द है जिसके साथ 2 + V1. ये सब अगेन preposition usage में बताऊंगा, verb usage में भी आता है ये. अगेन ये सब रेगुलर कोर्सेज की चीजें हैं जो उसमें मैं डिटेल में कवर करूंगा. नेक्स्ट, यू विल गेन नथिंग बाय गेटिंग बैक एट हिम. आपको बताना है ये गेटिंग बैक एट क्या है. एडजेक्टिव, फ्रेजल वर्ब, प्रेपोजिशन, इंफिनिटिव. व्हाट इज गेट बैक एट? पार्ट्स ऑफ स्पीच. इंडीड, फ्रेजल वर्ब. फ्रेजल वर्ब बेसिकली होते क्या हैं? जैसे टर्न डाउन, टर्न इन, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन या वर्ब प्लस एडवर्ब भी समझ लो, ये मिलके फ्रेजल वर्ब बनते हैं. पास अवे, पास आउट, ब्रेक डाउन, ब्रेकअप, ब्रेक अवे, टर्न डाउन, टर्न इन, टर्न आउट, ये सब फ्रेजल वर्ब्स हैं. वर्ब प्लस प्रेपोजिशन मिलके बनते हैं. सो getting back at him, you'll gain nothing but by getting back at him. Getting back at is a phrasal verb. B is correct. Boil down to, हाँ वो भी एक phrasal verb था. The frustrating experience during the tour made me agitated. What is frustrating here? Gerund, noun, pronoun or participle? I'm sure कई लोग गलती करोगे इसमें. अनुभव, जेरेंड क्या होता है? आईएनजी वर्ब दैट एक्ट्स लाइक अ नाउन. आईएनजी वर्ब जो नाउन के तरह एक्ट करे उसे हम कहते हैं जेरेंड. तो क्या ये फ्रस्ट्रेटिंग नाउन है? नॉट एग्जैक्टली. फ्रस्ट्रेटिंग जो है वो एक्सपीरियंस के बारे में बताए. एक्सपीरियंस नाउन है तो फ्रस्ट्रेटिंग इज एन एडजेक्टिव, बट जेरेंड हमेशा नाउन होता है तो ये नहीं हो सकता. क्या ये नाउन है? नहीं. प्रोनाउन है? नहीं. दिस इज एक्चुअली अ पार्टिसिपल. फ्रस्ट्रेटिंग इज पार्टिसिपल. वर्ब के थर्ड फॉर्म और वर्ब के फोर्थ फॉर्म को हम पार्टिसिपल्स कहते हैं. पार्टिसिपल्स क्यों कहते हैं? इनके 3 खासियत होती हैं. ये अलग अलग वाक्यों में वर्ब के तरह, नाउन के तरह या एडजेक्टिव के तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं. डिफरेंट सेंटेंसेस दे कैन एक्ट लाइक वर्ब्स, नाउन्स और एडजेक्टिव्स. So that's the reason you call them participle, and here it is a participle, not a gerund. वहीं frustrating अगर noun के तरह इस्तेमाल किया गया हो तब वो gerund हो सकता था. Alright, next question. In the end, you will get what is rightfully yours. What is yours? Possessive pronoun, possessive adjective, relative pronoun, or proper noun.
What is it? Okay, yours is indeed a possessive pronoun. A is absolutely correct. Yours is a possessive pronoun. A is right. Great, you finally made it. What is great? Adjective, interjection, adverb or verb? Interjection, very good. Words that give you sudden emotions or expressions like hooray, alas, wow, great, amazing. ये सब कुछ interjections हैं which show sudden emotions or expressions. Next question, ew, it tastes so bad. What is ew? Simple one, adverb, preposition, interjection, determiner. You क्या है? It is again an interjection. Simple one, showing sudden emotion or expression. याद रखना कभी भी FI या इस टाइप का है यू, ये जो शब्द है ये सारे डिस्गस्ट या हेट दिखाते हैं, छी छी टाइप्स के वर्ड हैं जो हिंदी में छी छी कहते हो, उस टाइप के वर्ड. राइट, सो दीज वर द क्वेश्चंस ऑफ द डे. उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा. पूरे दो घंटे का ये सेशन चला है आज. ये पूरे हफ्ते 7 से 9 सेशन चलेगा इंग्लिश का, 2 घंटे का. और लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं अगले सीजन सितंबर के लिए, इफ यू वांट टू प्रिपेयर वेल, योर बेसिक्स आर नॉट स्ट्रांग इनफ, योर कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वोकैब स्किल्स आर नॉट स्ट्रांग इनफ, आई वुड एडवाइज you to take this particular course, जहां पे आपको नवरात्रि के शुभ अवसर पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है 40% plus 35% off, and in addition you're getting a fixed 50% extra validity on our courses for CDS, CAPF, AFCAT. जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए आपको मिलेगा डिस्काउंट. दिस द कोर्स फी बट डिस्काउंटेड रेट इज दिस. इस डिस्काउंट को आपको अवेल करने के लिए you have to use this code JOSH. Only then you'll get this discount. This offer is valid from 21st to 23rd March only. इसके अलावा you get a chance to get free Vaishno Devi Darshan trip from Make My Trip as well. So great offer for you people. So that was the end of the session. Subscribe to the channel to like the session if you really liked it. Share the session more and more. Join the Telegram group and bring in doubts, queries if you have. अभी इस हफ्ते 7 to 9 फ्राइडे तक चलेगा ये इंग्लिश सेशन. सो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा. उम्मीद करता हूँ आई ब्रिंग इन अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे होंगे. सो दैट वाज इट इन दिस सेशन गाइस. मैं आपसे मिलूंगा अगले सेशन में. तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ एंड टेक केयर एवरीवन. बाय. कल रात माता का मुझे मैसेज आया है और माता ने आप सभी को टेक्स्ट बुक पर बुलाया है. जी हाँ, माता का मैसेज आ गया है और आ गई है नवरात्रि सेल. इस 21, 22 और 23 मार्च को अप टू 90% ऑफ मिलेगा सभी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ. इतना ही नहीं, आप मेक माई ट्रिप के साथ जीत सकते हैं मौका वैष्णो देवी जाने का और माता के दर्शन करने का. साथ ही टेक्स्ट बुक पास पर एक ऐतिहासिक ऑफर, सबसे कम दाम पर मिलेगा 1 साल की वैलिडिटी वाला टेक्स्ट बुक पास सिर्फ ₹249 में. तो अगर आप एसएससी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टीचिंग, एजेई, इंजीनियरिंग, डिफेंस, स्टेट पीएससी, यूपीएससी से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए और एनरोल कीजिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर. जय माता दी.